देख लेगा उसका डाउट। ओके सो हमने लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन यूनिट्स डिस्कस किया था, है ना? यस सर। मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। सो आज हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Is my screen visible to you all? Yes, sir. Okay. So stoichiometry, this is the last, probably the topic of this chapter. And कुछ है नहीं इसमें थ्योरी, बस इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं वैसे तो वो क्वेश्चंस ही हम करेंगे। स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या होती है? सो लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री एग्जैक्टली। स्टोइकियोमेट्री इज अ वे of doing some calculations based on chemical reactions. ठीक है, chemical reaction कोई भी होती है, for example like if you say combustion of methane or you say formation of ammonia, so these are basic chemical reactions, and in these chemical reactions we just determine that what reactant we are going to take and then what product will exactly form. So that all these types of calculations, they come under stoichiometry. All right. Like for example, if I say that I have methane and methane is burnt in air to produce carbon dioxide and water. So this is a chemical reaction, and in this chemical reaction, this is clearly understood that there is methane and it is reacting with oxygen. And another important thing is that this chemical reaction should be balanced. If your reaction is not balanced, then probably your question will be wrong. So let's first balance this reaction. Okay. So now here we can clearly understand that one molecule of methane reacts with two molecules of oxygen to form one molecule of carbon dioxide and two molecules of water. Okay, so we can make this chemical reaction more informative. How we can make it more informative? Like abhi to humko we can clearly understand, okay, what are the reactants and what are the products. But if we want to make it more informative, then we can simply like we can simply determine that what is the phase or what is the state in which this methane is. Like if it is a gas or it is solid, then we can simply write G in bracket. Then oxygen is in gaseous state again. Okay, so here we can make this reaction more informative. Okay, so now we can understand some more things about this reaction. Another thing is that in some reactions there are different kinds of temperature and pressure conditions which are required. Okay, so that temperature and pressure conditions, they are indicated on this arrow
that is there. Okay, we write like, suppose if any reaction is taking place, I'm not talking about this reaction, I'm just taking a general example. Like suppose if any reaction is taking place at 100 degrees Celsius and 100 atmosphere pressure, so simply you can write it like this. Okay, या फिर आप ऐसे comma लगा के लिख दो, whatever way you want to write. Then if in any chemical reaction sunlight is used, okay, so either you can write the sunlight like this, or you can use a symbol of light. This is a symbol that we use for light. Okay, so this also you can use. If you are heating a chemical reaction, then we make this kind of sign which indicates that we are heating the reactants to form the product. All right. So these are some ways in which we can make our chemical equation more informative. And the most important thing in the stoichiometry is that your reaction should always be balanced. Okay, because stoichiometry is something which is related to amounts. It is related to measurements. Okay, so always if you are taking a right amount of reactant for forming a certain product, so that would be better in a chemical reaction. Okay, like suppose now where stoichiometry is exactly used, it's exactly used like suppose if you want to prepare something in your lab, like suppose if you need 100 grams of ammonia for a chemical reaction, you have to prepare ammonia. So if you want to make that 100 grams of ammonia, then probably you'll first have to understand that what amount of nitrogen and hydrogen must be used so that we can produce 100 grams of ammonia. So for those calculations, basically this stoichiometry is used. And stoichiometry has nothing special, rocket science kind of thing. It is just that in stoichiometry, we are using unitary method. Simple unitary method and mole concept is what we are using in stoichiometry. And some questions may involve concentration units like molality also. But mostly the general idea that we use in stoichiometry is unitary method. We'll be seeing some examples and then we'll be doing the questions. So this is just this was just there about stoichiometry. Next thing is a term that we have to discuss is limiting reagent. What is limiting reagent? Limiting reagent means if in any reaction there is any reactant which is completely consumed when reaction is completed, so that reactant is known as limiting reactant. Means the one which is in which is present in limited amount. Okay, if any reactant is present in limited amount, then of course it would get consumed completely. कुछ भी नहीं बचेगा उसका. So that is known as a limiting reagent. Now, for example, if I say we have nitrogen and we have hydrogen and they both are reacting to form ammonia. Suppose you are given 2 moles of nitrogen and you are given 5 moles of nitrogen. So can you tell that what is the limiting reagent here? Okay, let me give you an idea. बच्चे यहाँ पे what you can see is that 1 mole of nitrogen, it reacts with 3 moles of hydrogen. Okay, so you are given 2 moles of nitrogen. So if 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen, then 2 moles of nitrogen will react with how many moles of hydrogen? This is hydrogen. 6. 6. तो क्या आपके पास 6 moles हैं? Do you have 6 moles here? No, sir. No. 5 है. So what is the limiting reagent? Hydrogen. This is the limiting reagent. Don't think कि nitrogen के moles कम है, so nitrogen is a limiting reagent. No. We have to look at the stoichiometry, that what amount is exactly required. Okay. So hydrogen is not completed in that amount as required by the total amount of nitrogen which is present. Hydrogen is present in a limited amount. So here hydrogen will be considered as a limiting reagent and nitrogen would be considered as an excess reagent. Because nitrogen is present in excess, so we say that nitrogen is an excess reagent here and hydrogen is a limiting reagent in this particular example. Okay.
Next thing is if we change this example, like for example, if I say that instead of 5 moles of hydrogen, you are given 7 moles of hydrogen. Then what is the limiting reagent in this case? So nitrogen. Okay, why? Because in this case, if 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen, 2 moles of nitrogen will be reacting with 6 moles of hydrogen. But in this case, you have more than 6 moles of hydrogen which is present. That means 1 mole of hydrogen will still be left. So here we have nitrogen as the limiting reagent and we have hydrogen as the excess reagent. I hope the concept of limiting reagent is clear to everyone. Yes, sir. ओके वो जो नया बच्चा उसका नाम क्या है आर्यन बच्चे Yes, क्लियर sir. है ठीक है Yes, sir. थोड़ा सा मतलब लगेगा कि भाई हम ये क्या पढ़ रहे हैं बट आगे चल के डाउट क्लासेस में वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स ओके एक और बच्चा था ना जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया था जिसने कल डाउट पूछा था मुझसे कौन है वो आप ही हो कोई और है कल उसने पूछा था कि उसको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट चाइल्ड मे भी कोई और होगा तो आज वो आया नहीं क्लास में अगर वो है तो ठीक है तो लिमिटिंग रिएजेंट आई होप सबको समझ में आ गया होगा ठीक है हम अब क्या करते हैं एक कोई भी क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं so you will better understand how to do questions related to stoichiometry one question I'll be explaining you how to do okay and then rest of the questions you will be doing by yourself okay so question is calculate the amount of water produced by combustion of 16 gram of methane. Okay. One more important thing that you have to remember while calculating the stoichiometric measures is always you have to solve the question through moles. Okay. हमेशा moles को you have to make the medium for solving the questions. Like हमने mole concept में सीखा था ना सारे रास्ते mole से होते हुए जाते हैं. All the ways they pass through moles. So here also the medium of calculating the amount of reactant or the amount of product, whatever is asked in the question, always you have to find it in terms of number of moles. And then later on, you can convert it into mass, volume or number of particles, whatever is asked in the question. Okay. So यहाँ पर कहा जा रहा है that you have to calculate that what amount of water will form when 16 gram of methane is burned or it is combusted. So the first step is that you have to write the chemical reaction. If it is already given in the question that what is a chemical reaction, it's very good for you. But if you don't know the chemical reaction, if it's not given in the question, then you have to write it by yourself. So methane is an organic compound and it burns in air to give CO2 and water. This is a basic chemical reaction which everyone knows. All right. And if you balance this reaction, so this will be your balanced chemical reaction. Balancing is very important. Now, you have been said that it is 16 grams of methane. So 16 grams of methane, and you have to find out the amount of water which is formed. So I said that you have to solve this question in terms of number of moles. So what you can first of all convert the 16 grams into moles. So number of moles, it would be 16 upon molar mass of methane is also 16. So it will be 1 mole.
Got it? First step is conversion into moles. Then you have to apply unitary method. How will you apply unitary method is very simple. If 1 mole of methane gives 2 moles of water, है ना? According to the reaction which is given, 1 mole of methane, it gives 2 moles of water. So, कितना water आपको मिल जाएगा? 2 into 18, if you want to convert it into grams, यानी कि 36 grams. Question में अगर mole पूछा है, you can either leave it till mole or you can convert it into grams. Your wish. ठीक है? So आपको question में 16 gram methane was asked. 16 gram methane is 1 mole, and according to this equation, 1 mole of methane gives 2 moles of water. So this is the amount of water which you will obtain in the reaction. Is it clear? Yes, sir. ठीक है. Now if I change the date, now this was an NCERT question. Suppose if I want to change the data which is given in this, like if I want to say, sometimes reverse question also comes, like you are given the amount of product and they can ask you ki batao this, if we want to prepare this much amount of product, then what should be the amount of reactant which must be required. Okay, so let's have this kind of question. And after that, they can also give you the mass mole conversion. Like suppose if this much molecules of CO2 are present, then calculate the molecules of methane which will be formed. But in that also, you have to first solve the entire question in terms of moles, and then you can do the later of conversion, whatever you have to do in the question, whatever it is asked. Okay. So, just say suppose I'm saying that you are given question is that how much methane is required to prepare 22 grams of carbon dioxide. Solve this. Sir, is the answer 8 grams of methane? ओके सो बाकी सबका आया 8 ग्राम्स. बहुत इजी क्वेश्चन sir. है. कैसे होगा ये देखो. So question says that you are given 22 grams of CO2 and you are asked that what amount of methane is required. So simply from this reaction, you can say that 1 mole of CO2 is formed by 1 mole of methane. So how many moles of CO2 is this? This is 0.5 mole. Okay, CO2 का molar mass 44 होता है. So if 1 mole of CO2 is formed by 1 mole of methane, then 0.5 mole of CO2 will formed by 0.5 mole of methane. yes, exactly. ठीक है.
ठीक है, अब आपको हाउ मच पूछा है, तो हाउ मच आप मोल्स में भी लीव कर सकते हैं, अगर आप मास निकाल दो तो और अच्छी बात है, दोनों में लीव करके रख दो, मास को फिर आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, दिस विल बी 8 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज सिंपल मास मोल कन्वर्ट, ये आपका होता है स्टोइकियोमेट्रिक में, इसी तरीके की कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, okay, now I am giving you one more question which is based on limiting reagent. ठीक है, and what type of questions usually come in this? You are given amounts of reactants in a reaction, then according to the reaction you have to determine what is the limiting reagent, what is the excess reagent, how much excess reagent will be consumed, how much excess reagent will be formed, oh sorry, how much it will be left. These type of reactions, they come in limiting reagent. Also one thing you have to remember, what is that, like here इस क्वेश्चन में in this example हमने यहाँ पे देखा था कि if we wanted to find out the amount of CO2, मैंने आपको सिर्फ CH4 का अमाउंट दिया था इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, है ना, only CH4 amount was given. So what if amounts of both the reactants are given to you in the question? Suppose in the question I give you the amount of CH4 also, if I give you the amount of O2 also. So किसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करोगे? आप CH4 के अकॉर्डिंग करोगे कि आप ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग करोगे? कोई बता सकता है इसका आइडिया? देखो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, लिमिटिंग रिएजेंट इज द वन व्हिच इज गेटिंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड, है ना. सो ऑल द कैलकुलेशंस इन स्टोइकियोमेट्री will be done on the basis of limiting reagent only. ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों reactants के amounts दे रखे हैं, if in any question you are given amounts of both the reactants, then first the step one would be determination of limiting reagent, and then you will do the calculate the amount of product form according to the limiting reagent. ठीक है, एक्सेस रिएजेंट के टर्म्स में आप कभी भी प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं निकालोगे. क्यों? क्योंकि एक्सेस रिएजेंट तो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ठीक है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा अगर वो लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो गया तो. सो ऑलवेज व्हाइल परफॉर्मिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, if the amounts of both the reactants is given to you, the first step would be determination of limiting reagent, and then you will be finding out the amount of product which is formed by by the help of whatever limiting reagent you have found. Okay, let's do a question based on this. Okay, so काम करते हैं, PPT का तो कोई काम नहीं है, we can end this PPT. Okay. So question is that 50 kilograms of nitrogen and 10 kilograms of hydrogen, they are put together in a reacting mixture to produce ammonia. Okay. So what you have to do is you have to calculate the amount of ammonia. Okay. So what you are going to do is, let me give you the solution of this. So first step is that you have to write down the chemical reaction and you have to balance it. So this is your balanced chemical reaction. Next step is that you may write the amounts which is given. In this question, you are given the amounts of both the reactants. Okay. So if you want to find out the amount of ammonia which is formed,
then what you have to do is, first thing that you will be doing is you have to determine the limiting reagent, which is there in this reaction. So to find out the limiting reagent, what you'll be doing is, there are two ways. The simplest way is that either you may first convert nitrogen and hydrogen amounts into moles, okay, and then you can see according to the stoichiometry, you can determine that what is the limiting reagent. Second method is that you can, without converting into moles, you can simply do it in terms of masses also, okay, if you are capable of doing that. But sometimes with the help of moles, it is more easier. So I'll be explaining you to do these calculations by both ways, okay. So फर्स्ट मेथड वी आर टॉकिंग अबाउट, बच्चे जो नया वाला बच्चा उसका समझ में आ रहा है, आर्यन? यस सर। ठीक है, तो पहला मेथड ये है कि आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो मोल्स में व्हेन यू विल कन्वर्ट दिस, सो दिस विल बी 50/28, ठीक है। अच्छा केजी है ना, चलो इसको थोड़ा सा हम ग्राम्स में ले लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। लेट्स टेक इट इनटू ग्राम्स। ठीक है, ये 50 ग्राम्स हो गया, ये 10 ग्राम्स हो गया। तो 50 grams upon 28, how many moles it will be? Let me calculate. This will be around 1.78 moles. And this will be around, oh, sorry, this is 2. So this will be around 5 moles. Okay. Now, moles of both the reactants are given. So what you have to do, you have to determine the limiting reagent. How will you do that? 1 mole of nitrogen requires 3 mole of ammonia, 3 mole of hydrogen to form ammonia. So what amount of hydrogen will be required by 1.78 mole of nitrogen? That will be 3 into 1.78 moles. So this will be around 5.34 moles. This much moles of hydrogen is required. So do we have this much amount of hydrogen present with us? क्या हमारे पास इतना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? No, sir. No, sir. No. No, sir. So what is the limiting reagent? Hydrogen. Exactly, hydrogen is the limiting reagent. So if we want to find out the amount of ammonia, we will be using hydrogen only to find out the amount of ammonia. We will not be using nitrogen. Okay. Now simply like as we did in last question, using unitary method, you can find out the amount of ammonia. How will you find out? If 3 moles of hydrogen forms 2 moles of ammonia, okay, then 1 mole of hydrogen will form how much ammonia? 2/3. यही करते थे ना यूनिटरी मेथड में बचपन में। यस सर। Then 5 moles of hydrogen will form, क्योंकि हमको 5 moles दे रखे हैं यहाँ पे। 5 moles will form how much? 2/3 into 10 into 5. So this will be 10/3. So this is the moles of ammonia formed. तो अगर आपको अमोनिया को मास में कन्वर्ट करना है, तो मास ऑफ अमोनिया विल बी मोल्स ऑफ अमोनिया इनटू मोलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, this is the first method in which you will be finding out it in terms of moles. ठीक है, जब आप moles के through find out करते हो। ठीक है, here we are using moles in this, like this. Any problem in this method that we are using? No, sir. Okay. So next method we are using, in which we will be skipping the step of finding out the number of moles. Okay.
ठीक है. So here this is method 2 in which we will not be using moles. जैसे हमको क्वेश्चन में 50 ग्राम्स और 10 ग्राम्स दे रखा था. ठीक है. So we will be using in terms of mass. in mass के terms में हम लोग calculations कर लें अगर direct. तो आप if this chemical reaction is given to you, so if we want to elaborate this chemical reaction in terms of mass, can we say that 28 grams of nitrogen requires 6 grams of hydrogen? Can we write it like this? Can we write it like this or not? Here we are not using moles. Here we have just converted moles into mass. अपने मन से. This is 1 mole of nitrogen. 1 mole of nitrogen is 28 grams. And 3 moles of dihydrogen is 6 grams. Is there any problem if we write it like this? No, sir. ठीक है. So 28 grams of nitrogen requires 6 gram of hydrogen. So 1 gram of nitrogen, using unitary method again, 1 gram of nitrogen will require 6 by 28 grams of hydrogen. And 50 grams of nitrogen will require 6 by 28 into 50. If you calculate this, then you will get 10.7. ठीक है. So do we have hydrogen in that amount which is required? No. 50 grams of nitrogen will be requiring more than 10 grams of hydrogen, but we just have 10 grams. So by this method also you can calculate the limiting reagent. All right. And then you can again use this method in calculating the amount of ammonia. How? 6 gram of hydrogen can produce 34 grams of ammonia because molar mass of ammonia is 17. So 2 यहाँ पर 2 moles है ammonia के, so you will be writing it 34 grams of ammonia. Can we write it like this? Any problem if we write it like this? No, sir. Okay. No, So sir. 1 gram of hydrogen, it will form 34 by 6 gram of ammonia. And how much hydrogen is given in the question? 10 grams. So 10 grams of hydrogen, it will form 34 by 6 into 10 grams of ammonia. Okay. So this will be 340 by 6 grams of ammonia, and you can convert it into decimal form, which is around 56.6 or whatever. Okay. So here we haven't used moles. You can simply calculate it in terms of masses also if you want to skip that step of moles. But if you do it by moles, then that would be more convenient and accurate method in terms of teacher's eyes. Okay. तो बाकी ये भी तरीका एक करने का सही है. If you are more experienced, if you are more professional and talented person, if you know stoichiometric calculations very well, then you can use this direct method also. Otherwise, I guess that the one method that we used in moles wala, that is, I guess, more convenient for you guys at your level, right? कौन सा convenient लगा आपको? Sir, I think the by mass one, the second method. Second method, क्योंकि यहाँ पर आपको moles में convert नहीं करना पड़ रहा है, that's why, है ना? Yes, sir. Yeah, I knew that. Okay, so we are doing one more question. I hope सबको clear है ये. It is clear Yes, to sir. the new Sir. student as well. ठीक है, हम फिर इसको मिटा देते हैं.
ठीक है. So this is another question from NCERT. Please solve. If 20 grams of calcium carbonate reacts with 20 grams of HCl, calculate the grams of CO2 produced. करो. Although वैसे mass वाला method that you are saying it is more convenient, but एक बार still you may ask your school teacher कि वो कौन सा accept करेंगे. ठीक है, क्योंकि there are some school teachers जिनको पूरा एक proper procedure चाहिए होता है question solve करने के लिए. So better ask your teachers that what method will they accept in the examinations. ठीक है, answer दोनों ही methods से ठीक आएगा. Okay, sir. या क्योंकि कुछ होते हैं खड़ूस टीचर्स भी. ऑल्दो अगर मेरे पास कोई कॉपी आती है चेक करने के लिए मैं तो करेक्ट कर दूं.
Sir, done. क्या आंसर है? Sir, 8.8 grams. 8 पॉइंट, ठीक है। बाकी के लोग? चलो देखो जो नहीं कर पाए। हाँ, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट है और यू हैव 20 ग्राम्स ऑफ HCl विच इज गिवन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो 20 ग्राम्स एंड दिस इज ऑल्सो 20 ग्राम्स, ठीक है। तो आइदर वेज दैट यू मे कन्वर्ट इट इनटू मोल्स, ठीक है, या फिर आप मास के टर्म्स में करो। देखो मोलर मास तो आपको हर केस में निकालना ही निकालना है, ठीक है, तो किसी से भी करो फर्क नहीं पड़ता। So molar mass of calcium carbonate will be 40 plus 12 plus 48. This will be 100 grams. And for HCl it is 36.5. ठीक है। तो किस मेथड से करें? चलो मास वाले से कर ले रहे हैं। तो according to this reaction, 100 grams of calcium carbonate reacts with 36.5, this will be 73 grams of HCl, ठीक है, क्योंकि 2 मोल HCl है ना, so this will be 73 grams of HCl. So 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने के साथ रिएक्ट करेगा? This will be 73 by 100 into 20, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? This will be 1 Sir, 14.6. 6 ग्राम, ठीक है, 14.6 grams of HCl. Now the amount of HCl which is given to you in the question, it is more than what will react, okay. So you can say that here calcium carbonate is the limiting reagent, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या था? to determine that what is the limiting reagent. Even if it is not mentioned in the question that you have to determine the limiting reagent, then you will have to find out the limiting reagent. The reason being that because the amounts of both the reactants, they are given to you, okay, so that's why it is necessary to find out the limiting reagent, ठीक है। तो अब आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। एक सेकेंड बच्चे, Sir, 73 आएगा या फिर 44? हाँ जी, हाँ बच्चे क्या कह रहे हो? Sir, 73 आएगा या फिर 44? Sir, 44. 44 क्यों आएगा बच्चे? यहाँ पर आपके पास 2 मोल्स हैं HCl के, एंड आपका जो मोलर मास है HCl का वो 36.5 ग्राम है। तो एक Yes, मोल sir. का HCl का अगर 36.5 ग्राम है तो 2 मोल्स का 73 ग्राम्स होगा ना, Okay, sir. है ना। So Yes, 1 sir. mole of calcium carbonate is reacting with 2 moles of HCl.
1 mole of calcium carbonate is having mass 100 grams. 2 moles of HCl will be having mass of 73 grams. That means 100 grams of calcium carbonate that will be reacting with 73 grams of HCl. So this will be the amount of HCl that will react with 20 grams of calcium carbonate. And since we have this in less amount, जो आपके पास already present HCl है, that is more amount than what is required. So HCl will be the excess reagent and calcium carbonate will be the limiting reagent. Now, what is there is that since you have been given both the amounts, आपको calcium carbonate का भी amount given है and आपको HCl का भी amount given है, so आप क्या करोगे? आप पहले limiting reagent determine करोगे, वो हमने कर लिया. मेरा calcium carbonate limiting reagent आ गया. अब आपको क्या करना है? Question में कहा जा रहा है that you have to calculate the amount of CO2 which is produced. So you will be doing the calculation in terms of limiting reagent, which is calcium carbonate in this case. So according to this reaction, 1 mole of calcium carbonate produces 1 mole of CO2. ठीक है? दिख रहा है सबको? That means 100 gram of calcium carbonate forms 44 gram of CO2. So 1 gram of calcium carbonate will form how much CO2? 44 by 100. And 20 grams of calcium carbonate will form 44 by 100 into 20, यानी कि 8.8 ग्राम. ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर, समझा के पूरा. ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का. अब एक ना इसमें एक चीज और रह गई है, मैंने लास्ट क्लास में शायद बोला. आर्यन, वर यू देयर इन लास्ट क्लास? नो, आई गेस नहीं थे ना आप? नो सर. ठीक है. लास्ट क्लास में ना हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ा था. प्रोबेबली द नेक्स्ट a very small topic that I am going to explain. You may not understand, it's okay. हम आगे चल के देखेंगे उसको. So हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी solution की concentration को determine करने के लिए, if we want to determine the concentration of any solution, then we find it out in terms of molarity, right? So molarity is what? It is moles of solute divided by volume. Now suppose if there are two solutions, if this is solution A, this is solution B. Suppose इसकी कुछ molarity है M1 and volume is V1. And if suppose this is having some molarity M2 and the volume of this solution is V2. And you are mixing these solutions to form a new solution. So what will be the molarity of this solution? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? That new molarity will be equal to M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2. ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. आई डोंट नो एनसीईआरटी में है या नहीं है, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. डन. हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? मेरी वॉइस आ रही है क्या आप लोगों के पास? यस Yes. सर. हाँ, कोई कुछ कह रहा Yes, था sir. ना? कौन कह रहा था? Yes. डन सर. अच्छा, हो गया. ठीक है. Yes. तो यू कैन फाइंड आउट द मोलैरिटी बाय दिस फॉर्मूला. ये आपको जानना है कि फॉर्मूला आया कैसे या नहीं जानना? ठीक है इतना. If you want to know how this formula came, then I can explain you that. Sir, I want to know. You want to know? Okay.
So बच्चे Yes, sir, हुआ it's- एक्चुअली ये कि सपोज इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे, इसमें भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है। तो मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने मोल्स निकाल लिए, कैसे मोल्स निकाले, n is equal to molarity into volume. By this formula you found out the number of moles. So when you will mix this solution, total volume will be how much, v1 plus v2, yes or no? yes, sir. Yes, ठीक sir. है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, इसमें सपोज इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे m2 into v2, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे ए सोल्यूशन में, दैट विल बी m1 into v1, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी m1 v1 plus m2 v2. So if you want to find out the new molarity, that will be total number of moles that is now there in the new solution upon the total volume. ठीक है, got it? कैसे आया फॉर्मूला ये? Yes, sir. ठीक है। और कुछ अगर बचा है तो हम देख लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन एक आता है आपके पास, मोलारिटी इक्वेशन, ठीक है। मोलारिटी इक्वेशन आर्यन को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको पता नहीं अभी मोलारिटी क्या होती है, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे कभी अलग क्लास में। मोलारिटी इक्वेशन इज m1 v1 is equal to m2 v2। कैसे, मतलब क्या है इसका, सपोज यू आर गिवन अ सॉल्यूशन of molarity m1 and volume is v1, and if you want to prepare a new solution, ठीक है, new solution in which volume is changed but number of moles are same, ठीक है। तो आप उस नए सॉल्यूशन की मोलारिटी कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से, ठीक है। सर Where ये तो यही हो m1, गया ना, n1 equals to n2, तो हमने या उसकी वैल्यू या सब्स्टिट्यूट कर दी बस। एग्जैक्टली दिस इज योर इनिशियल मोलारिटी, ठीक है, this is your initial volume, n1 is equal to n2 वाला कॉन्सेप्ट ही यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। this is your new molarity and this is your new volume। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं whenever we have to dilute the solution, ठीक है। जैसे अगर आपके पास 100 ml का solution है and you want to dilute the solution to 200 ml, of course if you increase the volume of the solution तो आपका dilution हो जाएगा, ठीक है, अगर आप उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा डाल दोगे। तो डाइल्यूट करने पर उसकी फिर नई कंसेंट्रेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द न्यू कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सो फॉर दैट वी यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। बस इसमें यही था और कुछ नहीं था। सो दिस वाज योर चैप्टर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब मुझे बता दो कि नेक्स्ट क्लास में Sir, your mic is muted. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ बताओ फिर अगला चैप्टर क्या स्टार्ट करना है।
लास्ट जो आपके टीचर थे केमिस्ट्री के, उन्होंने कहाँ तक करवा दिया था, मतलब मुझे सर तो कोई उन्होंने idea फर्स्ट चैप्टर तो स्किप किया था, बट उन्होंने सेकंड पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दिया था, एंड क्लासिफिकेशन में बेसिक तो करा ही दिया था उन्होंने, और पीरियोडिक टेबल में लोकेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक वो सब करा दिया था। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? सर एक सेकंड, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें देख लेता हूँ नहीं, लास्ट ईयर। उन्होंने वो पढ़ा दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया था। No, sir, I don't think so. नहीं हुआ था ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं हुआ था, उसके बाद का तो फिर वैसे ऑब्वियसली नहीं हुआ सर होगा। किया था हमने पीरियोडिक टेबल तो। वो करा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नो Sir, सर। can we start from chapter 2 next class? हाँ, बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 Yeah. बिकॉज ओके चैप्टर 2 सर। काफी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन हो जाएगा जिन लोगों को आता है ना। ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऑल राइट, ओके अच्छा, सर। नहीं नहीं नहीं, एक डाउट क्लास रखते हैं, जिसको कोई डाउट, तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है? डाउट क्लास उसको हम रख लेंगे कभी भी। बता देना मुझे कब रखनी है डाउट क्लास, ठीक है, इन दिस वीक, एंड वील बी डिस्कसिंग डाउट्स। आप लोग प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस। आई होप नाउ द new PDF that I have uploaded, it is accessible, you can download it and solve questions। खुल रही है वो PDF? यस सर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यूनिट्स, स्टोइकियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट, इन तीन के स्पेशली आपको क्वेश्चंस करने, और हाँ वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले चारों टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। और डाउट्स क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब डाउट्स हैं तुम लोगों के, और फिर उसके बाद देखते हैं फिर टेस्ट कब रखना है। ठीक है, तो डाउट क्लास फिर कब रखते हैं हम लोग, इसी वीक रखें या नेक्स्ट वीक रखनी है? सर इसी वीक रखते हैं। इसी वीक रखनी है, चलो फिर इसी वीक रख यस लेते सर। हैं हम लोग। फ्राइडे को रख लेते हैं, चलो ठीक है। यस सर। ओके ओके, सर। फ्राइडे को रख लेते हैं, तो फ्राइडे तक आपके पास 3-4 दिन हैं, क्वेश्चंस कर लो प्रैक्टिस, और सर बट फिर देख। नेक्स्ट क्लास में तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट, नहीं तो अगर देखेंगे अगर एक्स्ट्रा क्लास रखनी होगी तो एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे। ओके सर। ठीक है, और चैप्टर स्टार्ट करना है तो चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, 1-2 क्लासेस के बाद डाउट क्लास रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे अगर तुम लोगों को ज्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए तो। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग सेव कहाँ सी होती है, मुझे देखना पड़ेगा।